जय श्री कृष्णा दोस्तों, राम राम अगेन। राम राम अगेन फ्रॉम ब्रूस। तो चलिए, आज हम आपको जो हमारी पिछली वीडियो थी, जो मैंने अपने कलीग विलियम के साथ कैरी फॉरवर्ड किया था, रिलेशनशिप और जो अपना अरेंज मैरिज का जो न्यूजीलैंड कल्चर और लाइफस्टाइल है, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि ये मेरे फैमिली फ्रेंड है ब्रूस, जो है अपने बारे में अपना ओपिनियन देंगे और बताएंगे कि न्यूजीलैंड में ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में कैसे कैरी ऑन करते हैं, मैरिज करते हैं। और ये अपने लिए भी एक जो है कमिटेड गर्ल देख रहे हैं कि जो मीन्स कमिटेड अच्छी सी कोई लड़की मिल जाए। तो आज हम ये वीडियो स्पेसिफिक उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उन गर्ल्स के लिए कि जिनको न्यूजीलैंड में सेटल होना हो अपने एक, बिकॉज ही इज़ माई फैमिली फ्रेंड एंड आई नो हिम वेरी वेल, so I can tell you about him anything because we are, I think since 2018 we are in been living at my place. Yes. So studio. Yes, I know. So हम लोग जो है 2018 से हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं साथ में। तो अच्छे से हम एक दूसरे की फैमिली से वो हैं। तो आप लोगों को कुछ भी जानना हो इनके बारे में तो मेरी फैमिली जो है आप लोगों को फुल जो आपको रेफरेंस चाहिए तो वी आर हैप्पी टू गिव दैट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अब इनके कल्चर के बारे में। वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट दैट? So tell me, Bruce, like what specifically you are looking from the Indian girl perspective, and why specifically India? Yeah, why? Good question. I travelled through India when I was a young man back in the late 80s, and I really loved the place and the vibrancy and, Really? and the culture. Oh, in 80s? In the India, Which yeah. place did you? I travelled through from Nepal through Right. down to crikey, down to Is Delhi. that Delhi? Yeah, Yeah, went capital? to Delhi, Agra, Jaipur, Wow. Khajuraho. Oh, nice place. Yeah, nice, some really nice places. So Oh. I travelled all through that northern part of India, Right. and I love the food. And Oh. I know. तो दोस्तों ये जो है 80s में इंडिया इन्होंने विजिट किया था। जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप स्पेसिफिक इंडियन गर्ल क्यों ढूंढ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि 80s में जब इन्होंने ट्रैवल किया था वाया नेपाल के थ्रू ये गए, दिल्ली गए, जयपुर गए और काफ़ी प्लेसेस इन्होंने जो बताया। तो इंडियन फूड भी इनको पसंद है। और अब what would you like? But it's a good question, why Indian girl? And I think I just really like the Indian culture. It's a very, very old culture. It's got a lot of traditions and depth to it. A lot of knowledge, you know, from relationships through to health, through to spirituality. A lot of I love your explanation. a lot of good, solid, Wow. you know, foundation to humanity. It's very old Right. and the centre of culture in a lot of ways. Thank you. And it has a lot of colour to it, you know, like the women wear very, very bright saris, and, you know, Oh, do you like that? yeah, Oh, okay. it's got a lot of colour and depth to it. And you met my Sri Lankan girlfriend, Yeah, I know. and that was really nice to learn about her culture. Right. And it's, I guess, quite similar in Yeah, some yeah. respects. Sri Lanka is also you know, part of part of India, yeah, exactly, the Indian subcontinent. Right. So जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो इंडिया में एक्सपीरियंस किया 1980s के दौरान, लाइक कि इन्होंने ज़्यादा तो नहीं, इन्होंने आगरा देखा, जयपुर देखा, नेपाल के थ्रू जब ये एंटर हुए, दिल्ली के अंदर घूमे, फिर उसके बाद खजुराहो गए और साथ में इन्होंने इनके लाइफ टाइम में एक इनकी श्रीलंकन भी गर्लफ्रेंड रही है। तो आफ्टर लाइक नॉट ओनली लाइक इंडिया, दे हैव ट्रैवल अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको लगता है कि इतने कंट्री घूमने के बाद जो इंडिया का जो कल्चर है बेसिकली वो सबसे बेस्ट कल्चर है। और इनकी अपनी लाइफ के अंदर अगर हम बताएंगे, जो हम आगे इनसे पूछने वाले हैं, तो पता चलेगा आपको कि इनकी लाइफ में एक इनकी शादी भी हुई, इनके बच्चे भी हैं, बट नाउ ये आज की डेट में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ये कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो इनको लगता है कि वट एवर द कमिटमेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट्स डेफिनेटली कम्स थ्रू इंडिया। बिकॉज हमारे जो कल्चर के अंदर जो रहता है, जो खास बात है हमारे कल्चर के अंदर, जो हमारी जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं वो बहुत कमिटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति। तो वही चीज़ हम इनसे आगे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में, और ताकि मतलब हम उनके लिए राइट पार्टनर को ढूंढ सकें। सो कमिंग बैक टू लाइक द मेन क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, Okay. what it involves, like what job you are doing, you would like to share with us? Yes. So I have 3 boys. They are 9, and 11, and 13 years old, so big. So they're getting bigger. So I live full time with them, full time with me.
I have my own house in Bishopdale, which is quite nice. Yes, It's been fixed up a lot since then. So yeah, and I'm looking for a lifetime partner, so someone for commitment and to be with me until die. sound like you're looking for So जैसे इन्होंने बताया Yeah. कि इनके 3 बच्चे हैं. There are 3 kids. So one is 13 years, 9 years, and another 11 years. Yes, So 3 बच्चे हैं. boys. लेकिन हमारे यहाँ Three 3 boys. boys are there. So अब हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अरे एक आदमी उसके साथ 3 बच्चे भी आएंगे हमारे साथ, तो उनके अपने जो बच्चे होंगे जो फर्दर जो लड़की के होंगे तो उसका क्या होने वाला है. But I am trying to convey here from like Bruce should also understand कि he will carry along with 3 kids. So what would be the future of that girl actually? So सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि as per the New Zealand culture, kids are liability but are to up to certain age level. After that, they are not liability of the parents actually. Unlike in India, what we do, like we own our children forever actually, Just even when we have kids grow up, they get married, still we don't want to leave them independent. We always trying to be very pushy. Oh, kids, you stay with us, till the time we retire, it's like a family bonding. Yeah. But coming back to New Zealand culture, these things doesn't works like that way. Yeah. So he has full responsibility for all the three kids, which he cannot escape through. But at the same time, after age of 14 and 15, kids will further move away without taking their father consent. So that means kids are no more liability. So the girl or woman, whoever want to come to this family, definitely will rest assured, kids are not going to be a burden for that perspective. Can Am I right? you Yes, please a little bit that's fair, explain yeah. in Hindi as well, Yeah. because people would like to know in Hindi or Yeah. all right दोस्तों, तो अब देखिए अपनी actually I would like to say convert in The same Hindi as well. thing. Same thing, Yes, because yes. so the some people specific in northern area they just say to why you are not making videos in our language. Okay. yeah, Yeah, so yeah. I'll explaining the same thing. Okay. Yeah. Okay. So please allow me for that. Yes. Okay, thank you. तो दोस्तों देखिए, जैसे अपने हम इंडिया के अंदर अगर मैरिड हैं तो हम सोचते हैं कि 3 बच्चे हो गए तो उसकी लाइबिलिटीज़ हो गई. यहाँ टोटली डिफरेंट है. बच्चे जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद, और उनका मीन्स आफ्टर 15 ईयर्स ओल्ड जो है तो माँ बाप के रहना पसंद ही नहीं करते. हाँ, स्पेसिफिक वो खुद भी पसंद नहीं करते माँ बाप के साथ रहना ज़्यादा. खुद जॉब करते हैं. और 15 ईयर्स के बाद उनको इजीली जो है स्कूलिंग के बाद ही इनको ट्रेड का कोर्स जो है स्कूल के थ्रू करा दिया जाता है, या इंडिपेंडेंट अपना जॉब मिल जाती है तो वो खुद ही सोचते हैं कि अपना बस निकल लो, अपना अलग रहें, मस्ती करें. क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी मीन्स इंडिविजुअल जो अपना ह्यूमन जो राइट्स होते हैं ना वो है. यहाँ ये नहीं है कि मेरा बेटा है तो मैं उसको बांध के रखूँगी, अरे उसके पोते भी देखने हैं मुझे, शादी मैं अपनी पसंद से करूँगी, वो सब नहीं है यहाँ पर. तो जो लड़की हम ढूंढ रहे हैं ब्रूस के लिए, तो वो बिल्कुल फ्री स्टाइल रहेगी. उसका अपना मतलब उसकी अपनी लाइफ बन जाएगी आगे जाके. हाँ. और सबसे बड़ी बात, उसके जो अपने बच्चे होंगे ये फर्दर टाइम उनके साथ स्पेंड करने वाले हैं. आई मीन टू से, तो लड़की को इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसकी 3 मतलब बच्चों 3 बच्चों के साथ के बारे में तो इस तरह का कोई सीन नहीं है. मतलब ये एक तरह की फ्रेश मैरिज ही कही जाएगी. हाँ, पर्सनल मैरिज अपना इजीली जो है वो एंजॉय करेगी मैरिज लाइफ को, जो मैरिड लाइफ को. तो इसलिए मैं क्लियर कर रही थी कि अपना इंडियन स्टाइल में मत सोचना, न्यूजीलैंड स्टाइल में सोचना. ऑल राइट, व्हाट वुड यू लाइक टू So maybe for work, I explain what I do for job. Yeah, definitely. The person the viewer would also be too interested for that. What is the financial stability Right. Okay. So, yeah. So I've been working this job for maybe 15 years. So I sell Microsoft and Oracle software to large businesses. So like for your job, Move Logistics, we put the software in that helps all the inventory move and the financials and the production. So it's a software consultancy type of job. And I've been doing it for many years now. And I've got a good salary. I last year earned $180,000. So yeah, I've got a great job. I So get 180,000. Yes. Or 100,000. no 100 plus 80, plus 180. 180,000. What does Okay. it mean in So around Indian currency? 2 lakhs. Roughly 2 lakhs New Zealand dollar? New Zealand dollar. To what? 2 lakhs New Zealand dollar. 200,000. Yes. Yeah, Oh, yes. 200,000. Yes. Okay. And what kind of asset you are carrying?
House. Yeah. My house. Yeah. Okay. घर हमने इनका देखा है, बेहद खूबसूरत घर है, मतलब We are just telling आप about समझ the लो कि house. मतलब एक तरह का हवा महल है. It is just like a big About $1 million. It's gonna be Exactly. sold for. Like $1 million. So जैसे बता रहे हैं कि तो घर की जो कीमत है वो 1 मिलियन के आसपास है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 7 करोड़ के आसपास मान लीजिए, और जो इनकी सैलरी है वो $2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर बता रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए करीब 1 करोड़ के आसपास, साल की 1 करोड़ के आसपास इनकी अपनी इनकम है. और जॉब जो है वो ये सॉफ्टवेयर सेलिंग करते हैं, और पिछले पूरी जिंदगी इन्होंने सॉफ्टवेयर सेलिंग के अंदर लगा दी है. ओरेकल आज की डेट में सेल कर रहे हैं ये, पहले ये मायोप सेल करते थे, आज ओरेकल सेल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ. तो ये आपको बता ही दिया है, इन्होंने अपने प्रोफाइल के बारे में. हाई प्रोफाइल पर्सन है एक्चुअली ये, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंपनी को भी ये सेल करते हैं अपना जो प्रोडक्ट है. तो बट द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड आस्क अबाउट. So what is your expectation from girl? Means what kind of you are looking like? What type of girl? Yes. Exactly. Well, love, affection, intimacy, commitment, intellect. Someone well educated. Someone wanting to, further their career, perhaps in New Zealand. Any age restrictions? No, not really. But maybe Any choice in between? 40 sort of early 40s maybe or younger. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने लड़की के बारे में जो रिक्वायरमेंट दी है वो अप्रोक्सीमेटली इनका जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स हो सकता है. इट कैन बी, हम 2-3 साल ऊपर नीचे मान सकते हैं, 35 से लेके 45 तक हो सकता है. बट मैं आज सबसे पहले सबसे पहले कहना चाहूँगा आप लोगों से कि गाइज यहाँ पे लड़कियाँ प्लीज वो ऑप्शन बताइए कि 18 साल की लड़की है, वो सिर्फ सेटल होना चाहती है न्यूजीलैंड के अंदर, और सिर्फ इसलिए कि मैं शादी कर लूंगी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ के, बिकॉज ही इज ए सिटीजन. तो हम वो ऑप्शन नहीं देखना चाह रहे. तो उस तरह के कमेंट्स ना कीजिएगा, ऐसी लड़कियां ना कमेंट कीजिएगा. मुझे पता है कि जैसे ऑप्शन मिलेगा तो लड़कियां भी कमेंट करना शुरू कर देंगी कि वो चाहे 20-21 साल. आई एम टू से लाइक we are just trying to say that we are not expecting a girl kind of like 80 years or sorry 18 years 20 years. No. That's too young, like and they just want to go migrate here. Away, so we are just conveying that messages. We just want to convey them, like the girl shouldn't look for migration, at least for New Zealand. Definitely he is going to support her with full visa, residency and everything, but it's not like, don't treat like a shortcut from that perspective. We will have full knowledge about all immigration system, and we won't encourage that, definitely. So that's not an option actually. What he's trying to convey in this video, he's looking for a genuine partnership relationship. So the girl should be genuine. He has a actual intentions. Any married, unmarried or widow, any with kids? No, it doesn't matter. It doesn't matter. No. Kids is a little bit trickier because kids are fine. Yeah. But depends upon the immigrant and like that stuff. तो वो कह रहे हैं कि मतलब शादीशुदा हो सकती है, विडो भी हो सकती है, बच्चों के साथ भी आ सकती है. लेकिन अब अगर हम बात बच्चों की करते हैं तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 40 इयर्स के एज लेते हैं, अगर उसमें बच्चे उसके साथ आएंगे तो बच्चे स्पॉन्सरशिप नहीं हो पाएंगे उसके अंदर, तो वो एक थोड़ा सा ट्रिकी रह जाएगा. फिर मदर वहाँ पे अटक जाएगी इंडिया में, उसका दिल वहाँ पे अटका रहेगा, वो यहाँ पे रह नहीं पाएगी. तो इस तरह के भी कोई सर्कमस्टांसेस ना हो कि वो हमारे साथ कमेंट करना शुरू कर दे कि नहीं I have 2 kids. भाई वो बेटे हमारे 21 years के हो गए हैं. My son is 21 years, girl is 22 years. I also want to bring my kids to New Zealand. That cannot be happen. Immigration won't allow this kind of relationship. Trust me, immigration is very strict in New Zealand. There is no shortcut to settle down the entire family. The only logic for this video is we can only looking for a genuine relationship for committed one. Yeah. ऑलराइट दोस्तों, अब हम सभी को राम राम कह देते हैं. ब्रूस व्हाट डू यू से? राम राम. थैंक यू. सो राम राम बोल दिया है ब्रूस ने भी. अब आप कमेंट करके बता देना मेरे फ्रेंड जो है ब्रूस के लिए अच्छा सा ऑप्शन, सो दैट वो प्राउड फील करे हम लोगों के ऊपर कि बहुत कमिटेड लड़की बताई है. चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.